Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Welcome back to education classes. The video is meant for class 11th. And our today's topic is problems of organization of secondary education in India and solutions. Second organization of secondary education जो है उसकी problems क्या है और उसकी solutions क्या है हमारी country हिंदुस्तान में. तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. Dear students, डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reform. यानी जो हमारा secondary education है it is the weakest link in our education machinery and it needs urgent reform. ये डॉक्टर राधा कृष्णन का कहना है. और डॉक्टर R.C. दास कहते हैं कि जो education है which we receive is borrowed and imitated article. It does not cooperate with the national genius of our beings and hence is unable to enrich the life blood of our soul. Dear students, जहाँ तक problems का ताल्लुक है, there are certain important problems are secondary education. तो number first है जो है that is aimlessness. Secondary education जो है it is aimless. It is considered as a means to prepare an individual for higher education or getting employment. इसको ये कंसिडर किया जाता है कि सेकेंडरी एजुकेशन एक इंडिविजुअल को तैयार करती है हायर एजुकेशन के लिए या गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. तो neither does it prepare the individual for world of work nor does it develop personality as a whole. ये एक प्रॉब्लम है. तो इसकी सोल्यूशन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, कुछ एम्स है, एम्स ऑफ एजुकेशन दे शुड बी प्रॉपरली डिटरमाइंड. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहता है उसके जो कुछ एम्स है उसने कुछ एम्स डिटरमाइन किए हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स जहाँ तक इनका ताल्लुक है इसकी सॉल्यूशंस के लिए कुछ एम्स दिए हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने. नंबर फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप करना. Number second is improvement of vocational efficiency. Number third is development of personality. Number fourth is development of qualities of leadership. ये इसकी solutions है. इसी तरह इंडियन एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन भी उसको कहते हैं, उसने भी कुछ सजेस्ट किए हैं एम्स ऑफ एजुकेशन. नंबर फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, accelerating the process of modernization, cultivating social, moral and spiritual values. Dear students, इसी तरह national policy on education जो है NP 1986-92 recommended कुछ aims उसने recommend किए हैं. नंबर फर्स्ट जो है that is education for all, यानी हर एक के लिए education लाजमी है. all round development of personality, development of socialism, secularism and democracy, development of manpower, international cooperation and peaceful existence, cultivating moral and ethical values. The greatest challenge of our education is to face the changing needs of the society. ये सबसे greatest challenge है हमारे लिए, हमारे education के लिए, to face the changing needs of the society. Therefore, the aims of education are bound to vary from time to time. Whatever the aims of education at a particular time and age, they must be related to the life, needs and aspirations of the people. Number second जो problem है that is unsuitable curriculum. हमारा जो secondary education का जो existing secondary education curriculum जो है it is faulty. It is narrowly conceived. It is subject centered. It is dry. It is bookish. It is unpsychological. It is theoretical in nature. It is dominated by examinations, यानी ज़्यादा dominate इस curriculum को examinations ने किया है. And it is not related to environment and practical life. ये एक problem है. The students read the traditional curriculum without interest, without understanding and without appreciation. Their main aim is to get through the examinations. बच्चों का main aim यही होता है कि हम examination पास करें या to get through the examination. इसके लिए solution जो है that is the curriculum should be diversified, flexible, people centered, activity centered, experience centered, related to social life, utilitarian and interlinked. The curriculum should also encourage the students to make proper use of their life
Dear students, it should be practical and functional in nature. It should be a hybrid mixture of general and vocational education. The needs and environment of the locality should be considered. ये इस प्रॉब्लम की सलूशन है. नंबर थर्ड इज डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स. जब हम स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो है सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड जो है दैट्स लो. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली एंड लैक ओरिजिनलिटी. मार्केट इज़ फ्लडेड विथ चीप नोट्स. अगर आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे नोट्स है, चीप नोट्स, गाइड्स है, रिफ्रेशर्स है, एंड दे ऑल आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. ये एक प्रॉब्लम है. तो सोल्यूशन इसके लिए ये है, टेक्स्ट बुक जो है दे नीड ओवरहॉलिंग. दे शुड बी रिटन बाय क्वालिफाइड एंड experienced hands engaged in teaching. Authorities should take great care in this direction. Next problem is poor condition of teachers. Dear students, in the view of rising cost of life, अगर हम आज की बात करेंगे, जो आज की लाइफ है that's very costly. The economic condition of secondary school teachers is far from satisfactory. There is great disparity in the scales of government and private institution teachers. They do not command respect and honor in the society. Other facilities are also few and far between. This creates difficulties in maintaining their efficiency. तो इसके लिए जो solution है, इसके लिए कुछ steps लिए गए हैं to reform the situation. Much remains to be achieved. There is need to take important steps in this direction, both by the government and by the public. A teacher should get his due on the basis of equality. Number 5th जो problem है that is defective method of teaching. Methods of teaching. Methods of teaching जो है जब हम secondary education की बात करते हैं which are generally followed in our, जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग है जो हमारे स्कूल्स में फॉलो होते हैं, दे आर डल, दे आर अनइंटरेस्टिंग, दे आर मैकेनिकल एंड लैक नेसेसरी मोटिवेशन फॉर लर्निंग. दे फेल टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. जनरली बुक रीडिंग एंड लेक्चर मेथड आर इन प्रैक्टिस. ये आपको भी पता है, आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग और this lecture method जो है they are in practice. The knowledge of teacher is also outdated. He is not conversant with new innovations and changes occurring in the field. No efforts are made to make it up to date. Colleges of education also suffer from backwardness. तो इसके लिए जो solution होनी चाहिए that is the emphasis in teaching should shift from verbalism and memorization to learning through purposeful, concrete and realistic situations. For this purpose, activity method, experiment method and project method should be used. ये method use होने, यानी activity method use होना चाहिए, project method use होना चाहिए और experiment method use होना चाहिए. Opportunity should be provided to the students for practical application of knowledge. Individual centered methods of teaching should be adopted in order to train the students in the habit of working independently. इसी तरह by balancing the individual and the group work, students are made to learn by doing as well as by living. Proper use of audio visual aids would go a long way in orienting teaching on healthy lines. Teachers should be helped and trained in the use of locally available improvised teaching. Secondary schools, in collaboration with College of Education, should make use of new methods and techniques available in the field. Necessary in-service training should be given to teachers through refresher courses, workshops, demonstrations and exhibitions of work. ये इसके लिए solution है. Number 6 जो problem है, so far as the organization of secondary education is concerned, that is defective examination system. जो examination system है secondary education की जब हम बात करते हैं ये defective है. The prevailing system of examination जो है it is faulty. Examinations develop spirit of unhealthy competition among the students and encourage rote memory. The adversely affect physical and mental health of the students
a large a number of dear students, a number of epithets has been assigned to examinations like a bloodsucker, an enemy of true education, a bane of educational system, a glorification of memory, a growing trainee, a necessary evil, a begetter of rivalry and strife. Examination is not a real test of knowledge of the students and the efficiency of the teacher. Books are smuggled in the examination, and attempts are made on the life of the supervisors who try to catch the students who use unfair means. Copying in the examination has become a student's birthright. Dear students, examination से students को नहीं परखा जाता है, परखा जाना चाहिए. अगर हम एग्जामिनेशन से स्टूडेंट्स को परखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है इट्स ए रॉट मेमोरी. इससे एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. और जो अनफेयर मीन्स है, जब हम कॉपिंग की बात करते हैं एग्जामिनेशन में, इट हैज़ बिकम ए स्टूडेंट्स बर्थ राइट. तो बहुत सारे लड़के कॉपिंग भी करते हैं, जिससे फिर वो जो जितने भी इंटेलिजेंट लड़के होते हैं वो उनसे थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो फिर उनमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसीलिए एग्ज़ामिनेशन जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है इट इज़ फॉल्टी. इसकी बुनियाद पे बच्चों को नहीं परखा जाना चाहिए. सॉल्यूशंस इसके लिए ये है, स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड नॉट ऑन द मेमोरी लेवल. द एग्जामिनेशन शुड बी बेस्ड ऑन द टोटल करिकुलम. द क्वेश्चन पेपर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक पार्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड थर्ड one is short questions. The number of external examinations should be reduced. There should be only one public examination at the completion of the secondary school course. Rational understanding should be encouraged. Internal assessment should find due place. Proper importance should be given to periodical tests and school records. Comprehensive approach to evaluation should be adopted, my dear students. Number 7th जो problem है, that is problem of wastage and stagnation. ये जो problem है wastage और stagnation की, it is found at the secondary level also. Elementary level पे भी देखा जा सकता है और secondary level पे भी इस problem को देखा जा सकता है. It is mostly due to unhealthy environment, due to discipline, due to lack of qualified teachers, etc. इसके लिए जो solution है वो है अट्रैक्टिव और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज होना चाहिए, क्लोज टीचर पीपल रिलेशनशिप होनी चाहिए, स्कॉलरशिप्स, एबॉलिशन ऑफ फी एंड अदर फाइनेंशियल एड will go a long way in eradicating the problem. There is need to create interest among children. Development of proper attitude towards the school programs will help to overcome the problems. Organization of people parent teacher association yani PTA can help a lot in the matter. Next problem is problem of student indiscipline. There is a widespread indiscipline among students, my dear students. जब हम indiscipline की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा discipline है among students. Aimless education, defective examination system, loss of moral and noble values, poor economic conditions of teachers, lack of competence of teachers. This defective curriculum are responsible for causing indiscipline among. ये चीज़ें responsible हैं. डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, या लॉस ऑफ मॉरल नोबल वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टीचर्स की बात करते हैं, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर्स की बात करते हैं, डिफेक्टिव कैरिकुलम की बात करते हैं. ये जो फैक्टर्स है, दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स. तो इसके लिए जो सोल्यूशन होनी चाहिए वो ये है, प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिसिप्लिन जो है दे कैन बी सॉल्व्ड थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ द टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट. इन सबों के बीच एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड गवर्नमेंट. ईच शुड रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रत्येक टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभाने चाहिए. एक कोऑपरेशन होनी चाहिए, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है. देयर इज़ नीड टू इंस्टॉल
a sense of install a sense of belongingness among students. Teachers can contribute much towards it. इसी तरह नंबर 9th जो प्रॉब्लम है, that is problem of low standards. Low standards of teaching is one of the main problem of secondary education. Government has primarily concentrated on the expansion of education and have not devoted the proper attention towards the qualitative progress of education. Due to expansion, standards have fallen. गवर्नमेंट सिर्फ एक्सपेंशन की तरफ देख रही है, तो इससे क्या हुआ है, स्टैंडर्ड जो है वो फॉल हुआ है, स्टैंडर्ड्स हैव फॉलन एंड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन जो है उसकी तरफ अटेंशन नहीं हो रहा है. डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड एवेल्युएशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग स्टैंडर्ड्स. तो इसके लिए जो सोल्यूशन है, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है दे नीड इम्प्रूवमेंट. पीपल सेंटर्ड, dynamic and progressive methods of teaching, these methods should be used. Learning by doing should be encouraged. Effective use of audiovisual aid should be made. Dedicated teachers should be appointed. In-service training should be provided to the teachers by organizing seminars, workshops, refresher courses, conferences, etc. etc. Examination जो है they require overhauling. Examination उसको overhaul करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे स्कूल का एग्जामिनेशन सिस्टम है ये फॉल्टी है. इसी तरह comprehensive approach to evaluation should be implemented. इसी तरह there should be healthy and congenial school environment for study. इसी तरह adequate facilities and freedom should be provided to the teachers. Number 10th जो प्रॉब्लम है, that is lack of community life. ये एक प्रॉब्लम है जब हम स्कूल्स की बात करते हैं. देयर इज़ लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लाइफ इन द सेकेंडरी एजुकेशन, इन द सेकेंडरी स्कूल्स. द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट स्पोर्ट्स, गेम्स, एक्सकर्शंस, फिजिकल एक्सरसाइज, सोशल एक्टिविटीज एट्सेट्रा which may establish close contacts among students or not organized in the schools. यम चीज़ छ यथ स्पोर्ट्स वनान, गेम्स एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज हैं, एक्सकर्शंस हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन होती हैं लेकिन उस तरह नहीं होती है जिस तरह होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ क्लोज कंटैक्ट रख सकते इन एक्टिविटीज़ से. तो ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है. स्टूडेंट सेल्डम जो है गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क cooperatively. Institutions fail to provide training in community life. Besides, there is absence of religious and moral education in schools. इसकी भी absence है. Religious और moral education नहीं हो रही है schools में उस तरह से जिस तरह होनी चाहिए. Thus, the schools of modern time have just become like a factory whose aim is to make the students pass the matriculation examination. यानी बच्चों का सिर्फ यही मकसद है हम मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करें या 12th का एग्ज़ाम पास करें या सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल के एग्ज़ाम को पास करें और आगे जाके हम एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें. सिर्फ यही एक मकसद है बच्चों का, और यही एक मकसद है हमारी. जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात, सेकेंडरी स्कूल्स की बात करते हैं, वहाँ पे इसी मकसद के लिए पढ़ाया जाता है. तो सोल्यूशन इसके लिए ये है, स्कूल्स शुड बी द सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है 1952-53 वो कहता है कि स्कूल जो है इट इज़ ए स्मॉल कम्युनिटी विद इन ए लार्ज कम्युनिटी एंड द एटीट्यूड, वैल्यूज एंड मोड्स ऑफ बिहेवियर विच हैव करेंसी इन नेशनल लाइफ एंड आर बाउंड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द स्कूल. हैंस स्कूल शुड बी a place which should reflect the elements of all the useful activities of the community. For all-round development of child's personality, there is need to provide opportunities of working together. यानी एक साथ काम करना. स्कूल्स में कम्युनिटी टाइप एक्टिविटीज़ लाजमन यानी लाजमी होनी चाहिए, ताकि कम्युनिटी वर्क क्या है, एक यानी वर्किंग टुगेदर क्या है, ताकि बच्चों को ये समझ आए, बच्चे ये सीख सकें. हॉस्टल, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, टूरिस्ट, स्टूडेंट यूनियन, डिबेट्स, डिक्लेमेशन, सेमिनार्स, फंक्शंस एंड अदर कल्चरल प्रोग्राम्स, दे हेल्प टू डेवलप कोऑपरेट लाइफ अमंग स्टूडेंट्स. दे शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंस्टीट्यूशंस एट रेगुलर इंटरवल्स. तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स. इस जो प्रॉब्लम्स है इसकी तकरीबन 10-20 प्रॉब्लम्स यहाँ पे हाईलाइट हुई हैं.
तो आज हमने 10 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। कल के वीडियो में हम और 10 प्रॉब्लम्स जो हैं और उसकी सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको पता है यहाँ कश्मीर में 2G की सर्विस अवेलेबल है। फिर जितना वीडियो लंबा होगा उतनी इस वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। थैंक्स वेरी मच।